Hello students, the question is electromagnetic waves with wavelength 10 nanometer are called, and the given options are option A infrared waves, option B ultraviolet rays, option C gamma rays, and option D X rays. So the problem is based on the topic electromagnetic waves, and the particular question is asked about the wavelength range. So wavelength range corresponding to the this particular wavelength 10 nanometer. So here is a table which shows different type of EM waves and their wavelength range. In this particular table we can easily see that 10 nanometer corresponds to the ultraviolet waves. So ultraviolet waves are having the wavelength range of 400 nanometer to 1 nanometer. So 10 nanometer means a particular value of wavelength which lies for the ultraviolet waves. Now we have to remember all others because in a question paper they may ask any of these. For example, radio waves, they are having the wavelength greater than 0.1 meter, and microwaves are having the wavelength range of 0.1 meter to 1 millimeter. Infrared waves, which are further subdivided into two parts, the near IR and far IR, having the wavelength range of 1 millimeter to 700 millimeter. 700 nanometer basically, this is 700 nanometer. Then light rays, or we can also call them as visible range of the spectrum, having the range of 700 nanometer to 400 nanometer. Then ultraviolet rays having the wavelength range of 400 nanometer to 1 nanometer. X rays having the value, that is range between 1 nanometer to 10 raised to power minus 3 nanometer. We can also call it as picometer. 10 raised to power minus 3 nanometer means 1 picometer. So this is the wavelength range of X-rays. These are also subdivided into two parts, the hard X-rays and soft X-rays. Gamma rays ranges from less than 10 to power minus 3 nanometer. So इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 10 नैनोमीटर की वेवलेंथ जो है उसको हम क्या कहेंगे, वो किस पर्टिकुलर रेंज में आएगी. तो हमें ये टेबल रिमेंबर होनी चाहिए. रेडियो वेव्स की वेवलेंथ रेंज 0.1 मीटर से अबव होती है. माइक्रोवेव्स की रेंज 0.1 मीटर से 1 mm के बीच में होती है. इंफ्रारेड रेज की वेवलेंथ रेंज 1 मिलीमीटर से 700 नैनोमीटर के इन बिटवीन होती है. 700 नैनोमीटर को हम 0.7 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं. 0 बेसिकली या 0.7 माइक्रोमीटर, 0.7 माइक्रोमीटर भी हम बोल सकते हैं. देन लाइट वेव्स जो हैं 700 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर की रेंज के बीच में होती हैं. अल्ट्रावायलेट रेज 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर की रेंज के बीच में होती हैं. एक्स रेज 1 नैनोमीटर से 10 पावर माइनस 3 नैनोमीटर रेंज की होती हैं. और गामा रेज 10 रेस्ट पावर माइनस 3 नैनोमीटर से लेस देन होती हैं. तो ये पर्टिकुलर टेबल हमें रिमेंबर होनी चाहिए ताकि इनमें से किसी भी वेव के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम उसका specifically answer दे सकें. Hope you understand the explanation. Thank you.